Good morning, friends. Welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. So, the Indian markets ended with losses on Friday. However, it was a good month of March. So, after 5 consecutive months of losses, the Indian markets managed to arrest some of these losses in the month of March. यूएस मार्केट्स अगर ओवरनाइट देखें तो शार्प रिकवरी देखी गई फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग लोज। तो तीनों इंडेक्स डाउ नैस्डैक S&P 500 में एक शार्प रिकवरी आई एंड दिस इज़ आफ्टर फ्राइडे एंड अर्ली मंडे मॉर्निंग का स्टीप फॉल जो हमने देखा यूएस मार्केट्स में। तो यूएस पीसीई डेटा फॉर द मंथ ऑफ फेब मार्जिनली हायर था एस्टिमेट से। तो ये फेड का प्रिफर्ड इन्फ्लेशन मेट्रिक रहता है, तो उसके चलते हमने करेक्शन देखा एज ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ्स विच आर लाइकली टू बी इम्पोज्ड ऑन announced on 2nd April. So the US futures are again trading lower. The US 10-year yield is lower at 4.2% in anticipation of these tariffs. Dollar index is at 104.1 level. Gold is above $3,100 per ounce in anticipation of the disruption that is expected to unfold due to the tariffs. ब्रेंट क्रूड अगर देखें तो $75 पर बैरल फिर से अप्रोच कर रहा है। तो यूएस ईरान के राइजिंग टेंशंस, सप्लाई कंसर्न्स एंड एक लार्जली स्टेबल डिमांड के चलते ब्रेंट क्रूड वापस $75 पर पहुंचा है। एशिया इज़ हायर टुडे इन द ओपनिंग ट्रेड आफ्टर टम्बलिंग yesterday when our markets were closed. So adjusting for these 2 days, GIFT Nifty is indicating a gap down opening, but we'll see post that how the markets, Indian markets behave. डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो कोर सेक्टर डेटा फॉर द मंथ ऑफ फेब वॉज लोअर एट अ 5-month लो एट 2.9%। तो हाई बेस इम्पैक्ट था एंड ऑल्सो अगर पॉजिटिव्स देखें तो फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट प्रोडक्शन ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ था। Today we'll get the auto sales numbers for the month of March. The GST collections also will be released, as also the Q4 provisional business updates will start trickling in. So banks, NBFCs, FMCG, discretionary consumption, realty, all these sectors will be in focus as the provisional business updates will start. Even for some metal products. Also, market is keenly anticipating the 2nd April reciprocal tariffs likely to be announced by Donald Trump in the US. स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज तीनों फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 36,950 करोड़ वर्थ ऑफ जो ड्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के गवर्नमेंट को जो देना है वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो इसके चलते गवर्नमेंट का होल्डिंग इन वोडाफोन आइडिया विल इंक्रीज फ्रॉम 22.6% टू 49%। तो नेचुरली आदित्य बिरला ग्रुप का स्टेक कंपनी में कम हो रहा है, तो इसके चलते ग्रासिम के लिए भी पॉजिटिव है, जो कि एक्सपोजर ओवरऑल टू दिस लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी विल रिड्यूस फर्दर एंड ऑल्सो फॉर इंडस टावर्स। तो इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी कंडीशन एट वोडाफोन आइडिया मीन्स दैट वोडाफोन आइडिया इंडस टावर्स को पैसे दे पाएगा फॉर दी टावर्स। सो पॉजिटिव फॉर वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम एंड इंडस टावर्स। लेकिन वोडाफोन आइडिया में आगे चलते एक कंसर्न रहेगा कि डाइल्यूशन हो रहा है। ये दूसरी बार है जब गवर्नमेंट ने ड्यूज कन्वर्ट करके अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आगे जाके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पैरामीटर्स वोडाफोन आइडिया इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग. HAL has received the largest ever order of 62,700 crore from the Defense Ministry for 156 Prachand LCH helicopters. So positive for HAL. GMR airports में mixed न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल यूज़र डेवलपमेंट फ़ी हैज़ बीन इंक्रीज शार्पली फॉर द दिल्ली एयरपोर्ट, बट द डोमेस्टिक फ़ी रिमेन्स अनचेंज। तो द कंपनी हैड रिक्वेस्टेड इंक्रीज इन बोथ दीज फीस, बट डोमेस्टिक हैज़ नॉट बीन इंक्रीज and which forms domestic forms bulk of the passenger traffic at Delhi airport. So I expect a slightly negative reaction for GMR airports today. BSE भी फोकस में रहेगा। 2:1 बोनस इशू बोर्ड ने अप्रूव किया है, तो BSE should react positively in today's trade.
आदित्य बिरला रियल एस्टेट एंड आईटीसी दोनों फोकस में रहेंगे। आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने अपना पेपर एंड पल्प बिजनेस आईटीसी को बेचा है फॉर 3500 crores। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर बोथ एज आईटीसी विल गेट हायर कैपेसिटी with a decent acquisition value, and Aditya Birla Real Estate will receive these funds which it will use for its real estate business and to reduce debt. So positive for both companies. Separately, Maharashtra government also has increased the ready reckoner rate in Mumbai and Maharashtra by up to 3 to 3.5%. So that is incrementally positive for Mumbai-based real estate companies. The domestic gas prices have been increased by the government in after 2 years from the legacy fields. So this is positive for ONGC and Oil India, which have these legacy fields, while the higher gas prices is likely to be passed on to the consumers. So IGL, MGL could react slightly negative in today's trade, but expect price hikes in CNG and pipe natural gas in the next 1 to 2 days. Suzlon Energy, its orders, certain orders value has got reduced and has also gotten cancelled. So negative for Suzlon Energy. Suprajit Engineering has completed the second part of the acquisition of the German entity. So positive for Suprajit Engineering in terms of this transaction, but overall negative until the tariff issues get sorted out. Tata Motors subsidiary JLR has sold the auto component business, some part of the auto component business to Tata Autocomp Systems. So largely neutral for Tata Motors. Adani Green Energy has increased its power capacity at the Khavda plant. So Adani Green Energy's capacity increases. JSW Steel has been declared as a successful bidder for a coal washery in Jharkhand for 25 years. RITES has received construction order. Powermech Projects has received orders. JK Cement has been declared as a preferred bidder for a limestone block in Chhattisgarh. There has been increase in cement capacities for Ramco Cement, Dalmia Bharat and Shree Cement, so incrementally positive for these companies as well. In terms of the promoter buying witness, so Mangalam Cement, Suntec Realty, Steel Strip Wheels, Alembic Pharma, Advanced Enzymes, all these stocks saw promoter buying in the last week. और कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जेबी केमिकल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटर सेलिंग देखा गया है. अजमेरा रियल्टी के प्रमोटर ने प्लेज इंक्रीज किया है, जबकि एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर ने स्टेक रिड्यूस किया है. So that's it on the from the Fundamental Podcast. Thank you for listening. Have a happy trading session. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.